Assalamualaikum everyone. Let's start with the session and obviously North and Gulshan दोनों के अंदर we wanted to start the costing. Centers के अंदर हमारा financial accounting का most of the content is covered and now we need to move towards the concept of costing. Sadly हमारी physical 1-to-1 या फिर जो actual class होती है वो conduct नहीं हो सकी. But we need to get started because we never know कि कब तक ये curfew जो हम पे impose किया गया है वो continue रहेगा. So let's start with the work, guys. Today we will be starting with introduction to costing management. Most of you have covered the concept. आप लोगों में से बहुत से लोग जिन्होंने join किया है class को उन्होंने already पहले से ये चीज cover up कर चुकी है. That means जो students schools में मेरे साथ पढ़ते हैं उन्होंने ये concept cover up कर लिया है. It's just that जो centers के students हैं उन लोगों को बिल्कुल हम बेसिक से कॉस्टिंग स्टार्ट करवाऊंगा आज एंड लेटर ऑन आगे चलकर जब हमारी क्लासेस रिज्यूम होंगी तो हम इधर से ही अपना कंटेंट स्टार्ट करेंगे. So let's start with the work, guys. It's introduction to cost and management. If you can hear me properly, if you can listen to me properly, just raise your hand. There is an option over here where you can raise your hands. If you can listen to me carefully, right? अगर आप मुझे सही तरीके से सुन सकते हैं तो just raise your hands or use a thumbs up. Can you listen to me, guys? Can you listen to me clearly? Just raise your hands. चलो नेस्ती को जल्दी जल्दी करो. Raise your hands. Good. All right, let's start with the work, guys. Let's start with the work. All right, kids, let's start with introduction to cost and management. Obviously, आज से पहले तक जिन students ने सिर्फ financial accounting study की है, they know the concept of financial accounting. They are aware of the function of financial accounting. Financial accounting का main purpose, main objective क्या है? To report the financial performance of the business. Financial accountants usually past historical data के अंदर deal करते हैं. That means they actually takes into account all those events जो already take place हो चुके हैं, जो transaction past में take place हो चुके हैं. हमने goods sale कर दिए, goods purchase किए, expenses incurred किया, revenue generate किया, non-current assets purchase किए. जो transaction past के अंदर take place हो चुकी होती हैं, financial accountants उन transactions को books of accounts में record करते हैं, enter करते हैं. That means financial accountants का काम historical transaction, historical data से deal करना है. The transaction which have already taken place, हम उन transactions को initial level पर अपनी books of original entries में enter करते हैं. Later on, these transactions are entered or posted to ledgers. By closing the ledger accounts, we extract trial balance, और वो trial balance हमें आगे help करता है in preparation of financial statements. That means financial accountants का main important task function क्या है? To report the performance of the business. Business ने actually कैसे perform किया, कितनी income generate की है, कितने expenses incurred किए हैं, इन सब चीजों को determine करने के लिए we prepare or the financial accountants work. Financial accountants का main काम shareholders को, owners को, business की performance report करना है.
But when it comes to cost and management accounting is not dealing with reporting of the business performance. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फंक्शन ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग नहीं है. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हिस्टोरिकल पास डेटा की ट्रांजैक्शन से डील नहीं करते. रादर इंटरनल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं. दे आर इन्वॉल्व इन प्लानिंग प्रोसेस. आने वाले टाइम के लिए दे एक्चुअली प्रिपेयर बजट्स, दे सेट अप टारगेट्स, दे प्रिपेयर गोल्स. That means they are actually involved in planning process. नए वाले academic year के अंदर कितने number of batches, कितनी number of classes conduct करनी है. Next financial year के अंदर, next year के अंदर how many number of units we are going to produce. हमारी selling price क्या होगी. Goods की manufacturing के ऊपर हम कितने cost, कितने expenses incur करेंगे. Goods की selling पर कितनी expenses incurred होंगे. What level of output will determine to avoid losses. ये सारी प्लानिंग करना किसका काम है? इंटरनल मैनेजमेंट का काम है. एंड देन इंटरनल मैनेजमेंट अपार्ट फ्रॉम प्लानिंग इज आल्सो इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग. किस तरह की डिसीजन मेकिंग? हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाहर से परचेज करें या खुद मैन्युफैक्चर कर लें, राइट? हम किसी ऑर्डर को एक्सेप्ट करें या फिर रिजेक्ट करें. ये सारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किसके पास कंट्रोल में आती है, किसका फंक्शन है? दिस इज इंटरनल मैनेजमेंट का फंक्शन. And once the actual activity take place, internal management अपने plans को, अपने targets को, अपनी actual performance के साथ compare करके अपनी performance का evaluation कर सकती है, appraisal कर सकती है. That means the third important function of cost and management accounting is evaluation and appraisal. तो internal management के like unlike the financial accountants का काम transactions को record करना और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिपोर्ट करना होता है. इंटरनल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं व्हिच इंक्लूड प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, इवैल्यूएशन एंड अप्रेजल. बिकॉज वी आर स्टार्टिंग विद द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्टिंग, तो सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि व्हाट डज द टर्म कॉस्ट मींस. कॉस्ट का क्या मतलब होता है? व्हाट डज कॉस्ट मींस? कॉस्ट के मीनिंग्स क्या है? Now you see financial accounting के अंदर हम terms use करते हैं expenses. Expenses का मतलब होता है expected outflow of resources. Expenses का मतलब है outflow of resources. For example, हमने travel किया, हमने traveling expense incurred किया. अब traveling expense के बजाय हम word use कर सकते हैं कि this is my traveling cost. हम पढ़ाई कर रहे हैं, we have to pay for our educational expenses. हम ये भी कह सकते हैं कि these are our educational cost, right? हम अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ एंटरटेनमेंट के लिए आउटिंग्स पे जाते हैं, तो that is our entertainment expense and we can also call it as our entertainment cost. That means cost और expenses का word हम practical life में interchangeably use कर सकते हैं. Financial accounting में outflow of resources is referred as expenses, whereas cost accounting में expected outflow of resources is referred as cost. That means जब हम manufacturing business की बात करते हैं, production की बात करते हैं, तो normally हम उसको cost से refer करते हैं. तो cost और expenses के अंदर कोई major difference नहीं है. It's just that financial accounting के अंदर we use the term expenses and cost and management accounting के अंदर we use the term cost. Now cost को हम different categories के अंदर categorize कर सकते हैं. Right? There are different ways through which we can categorize the cost. जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एक इंडिविजुअल को कैटेगराइज करना चाहूँ, राइट? से फॉर एग्जाम्पल किसी एक लड़के को मैंने कैटेगराइज किया, मैंने कहा कि आपको मैं जेंडर के बेसिस पे कैटेगराइज कर सकता हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर यू आर अ मेल और यू आर अ बॉय. मैं आपसे कह सकता हूँ कि एजुकेशन के बेसिस पे मैं आपको कैटेगराइज कर सकता हूँ कि यू आर एन ए लेवल स्टूडेंट. मैं आपको आपकी नेशनैलिटी के बेसिस के ऊपर कैटेगराइज कर सकता हूँ कि यू आर अ पाकिस्तानी. मैं आपको आपकी कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर कैटेगराइज कर सकता हूँ, राइट? तो बताने का पर्पस ये है कि देयर आर डिफरेंट वेज टू कैटेगराइज अ सिंगल कॉस्ट. एक ही कॉस्ट को अगर मैं चाहूँ तो चार इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या चार इंपॉर्टेंट कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज कर सकता हूँ, क्लासिफाई कर सकता हूँ. और वो चार इंपॉर्टेंट कैटेगरीज क्या हैं? Number one, if I want, I can categorize the cost on the basis of element. I can categorize the cost on the basis of nature.
अगर मैं चाहूँ तो मैं कॉस्ट को बिहेवियर के बेसिस पर भी कैटेगराइज कर सकता हूँ और फंक्शन के बेसिस पर भी कैटेगराइज कर सकता हूँ। दैट मीन्स किसी भी कॉस्ट को हम 4 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, एंड दीज 4 इंपॉर्टेंट distribution or classification or categorization of cost is based on element, nature, behavior and function. When we talk about element, कॉस्ट को हम जब एलिमेंट के बेसिस पर कैटेगराइज करते हैं तो कॉस्ट कैन बी मटेरियल रिलेटेड कॉस्ट। किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए मुझे एग्जांपल के तौर पर मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। अगर एग्जांपल के तौर पे इफ आई एम अ प्लास्टिक चेयर मैन्युफैक्चरर, तो उस प्लास्टिक चेयर को प्रोड्यूस करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए आई नीड प्लास्टिक। प्लास्टिक मेरा रॉ इंग्रेडिएंट है, रॉ मटेरियल है, दैट इज माय मटेरियल रिलेटेड कॉस्ट। Sir, apart from material, when we are involved in production, तो उस मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उस रॉ इंग्रेडिएंट को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट, प्रोसेस, ट्रांसफॉर्म करने के लिए आई नीड लेबर की फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज। इसका मतलब गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में हम जब कॉस्ट इंकर्ड करते हैं तो अपार्ट फ्रॉम मटेरियल वी आल्सो पे फॉर अवर लेबर। तो लेबर become one another component or element of the cost. That means प्रोडक्शन के अंदर कॉस्ट को हम कैटेगराइज करेंगे अगर एलिमेंट एंड कंपोनेंट के बेसिस पर, तो कॉस्ट का कंपोनेंट मटेरियल भी हो सकता है, कॉस्ट का एलिमेंट मटेरियल भी हो सकता है, कॉस्ट का कंपोनेंट लेबर भी हो सकता है, एंड कॉस्ट का कंपोनेंट ओवरहेड्स भी हो सकते हैं। सर व्हाट आर ओवरहेड्स? ओवरहेड्स को हम इनडायरेक्ट कॉस्ट के तौर पे कॉल करते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक प्लास्टिक चेयर मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, उसको प्रोड्यूस एंड मैन्युफैक्चर करने के ऊपर अगर मैंने मटेरियल कॉस्ट इंकर्ड की, रॉ इंग्रेडिएंट लगाया, प्लास्टिक इज माय रॉ इंग्रेडिएंट, दैट इज माय मटेरियल, लेबर एम्प्लॉय किया टू कन्वर्ट दैट रॉ इंग्रेडिएंट इनटू अ फिनिश प्रोडक्ट, दैट इज माय लेबर कॉस्ट। लेकिन जिस फैक्ट्री के अंदर मैं अपना आउटपुट लेवल प्रोड्यूस कर रहा हूँ, उस फैक्ट्री के अंदर मुझे इस फैक्ट्री का रेंट भी पे करना है, वहां मेरी मशीनरीज यूज हो रही हैं जो डिप्रिशिएट भी हो रही हैं, राइट? सिमिलरली वहां पर मैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी पे कर रहा हूँ, इंश्योरेंस कॉस्ट पे कर रहा हूँ। तो ऑल ऑफ दीज कॉस्ट आर रेफर्ड एज ओवरहेड्स, राइट? अपार्ट फ्रॉम मटेरियल एंड लेबर, कॉस्ट का तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट या कंपोनेंट क्या होता है? ओवरहेड्स, जिनको हम आगे चल के इनडायरेक्ट कॉस्ट के तौर पर भी कैटेगराइज करेंगे। तो when it comes to element or component, cost can be categorized as a material related cost, labor related cost and overheads related cost. Now apart from element, हम अपनी cost को nature के basis पर भी categorize कर सकते हैं। Now what is nature? जैसे इंसानों के अंदर नेचर होता है कि कुछ लोग इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट नेचर के होते हैं। सिमिलरली over here we can also categorize the cost on the basis of nature, और cost दो तरह का nature show कर सकती है, one is direct and another is indirect cost. Now what is direct cost, what is indirect cost? डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का क्या मतलब होता है? सर डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब कोई भी ऐसी कॉस्ट जिसे हम प्रोडक्शन के अंदर आउटपुट प्रोड्यूस करने में डायरेक्टली ट्रेस कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें, वो कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है? डायरेक्ट कॉस्ट है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एक आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा हूं, राइट, से फॉर एग्जाम्पल मैं एक पेंसिल प्रोड्यूस कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल किड्स आई नीड टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर पेंसिल। अगर मुझे ये पेंसिल प्रोड्यूस करनी है, राइट, तो इस पेंसिल को प्रोड्यूस करने पे मैंने पूछा कि बेटा व्हाट इज द कॉस्ट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर पेंसिल। अब एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी एक्सपर्ट इंडिविजुअल होगा, वो आइडेंटिफाई कर सकता है, ट्रेस कर सकता है कि सर ये पेंसिल प्लास्टिक के ऊपर एक स्पेशल कंपोनेंट के ऊपर प्रोड्यूस की गई है, इस कंपोनेंट की कॉस्ट इज से फॉर एग्जांपल $5, राइट, $5 पर केजी, इट्स $5 पर केजी, और इस पेंसिल को बनाने के लिए हमने 1 kg इंग्रेडिएंट यूज किया है। दैट मींस मटेरियल कॉस्ट कैन बी आइडेंटिफाइड। इस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड लेबर इनपुट,
और लेबर के ऊपर एग्जांपल के तौर पे द लेबर नीड टू वर्क फॉर 2 hours टू प्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर पेंसिल, इसका मतलब ये कॉस्ट भी डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल है, ट्रेसेबल है। जो कॉस्ट प्रोडक्शन से डायरेक्टली एसोसिएटेड होती है, प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड होती है, जिससे हम किसी भी पर्टिकुलर यूनिट कॉस्ट में आइडेंटिफाई कर सकें, ट्रेस कर सकें, दैट पर्टिकुलर कॉस्ट इज रेफर्ड एज डायरेक्ट कॉस्ट। आई रिपीट, that particular cost is referred as direct cost. So what is direct cost? The cost which is identifiable, traceable to a particular unit cost. जिस cost को मैं identify कर सकूं, trace कर सकूं, वो cost कौन सी cost है? Direct cost है। Example के तौर पर मैं particular product manufacture कर रहा हूँ। Sorry guys, I need to produce this particular product. इस product को बनाने के लिए example के तौर पर I need some of the raw ingredient. मैंने एक एक्सपर्ट से पूछा कि यार इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने पे मुझे कितना इंग्रेडिएंट चाहिए। दैट मींस इस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, एक पर्टिकुलर यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए आई नीड 3 kgs ऑफ रॉ मटेरियल एंड द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज 50। दैट मींस $150 की इसकी मटेरियल रिलेटेड कॉस्ट है, जो कि प्रोडक्शन से डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल है, ट्रेसेबल है। जो लेबर इस रॉ इंग्रेडिएंट को कन्वर्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, चेंज करता है इनटू फिनिश गुड, उसे एक सिंगल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 3 घंटे काम करना पड़ता है। और इस तरह के लेबर का मार्केट में वेज रेट इज $50 पर आवर। इसका मतलब अगेन $150 इज माय लेबर रिलेटेड कॉस्ट। फाइनली जब हम कोई आउटपुट लेवल प्रोड्यूस करते हैं तो सर्टेन टाइम वी नीड अ लाइसेंसिंग कॉस्ट। हम किसी का ब्रांड नेम अगर यूज कर रहे हैं, किसी का से फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट फॉर्मूला अगर यूज कर रहे हैं, अगर हम किसी की से फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट डिजाइन को यूज कर रहे हो, ब्रांड नेम को यूज कर रहे हो, तो उसके ऊपर licensing cost, and this also directly associated and related to production. Therefore, this is also referred as direct cost. तो what is direct cost? Direct cost का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी cost जो directly identifiable हो, traceable हो, हम उसे particular unit cost के अंदर trace कर सकें, identify कर सकें, जो कॉस्ट प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड होती है, आइडेंटिफाइबल होती है, उस तरह की कॉस्ट को हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। राइट? क्लियर गाइस? एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम? नाउ व्हाट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट? इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसी कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड ना हो, आउटपुट प्रोड्यूस करने में डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, आउटपुट लेवल को प्रोड्यूस करने में हम उसको ट्रेस ना कर सकें, प्रोडक्शन से डायरेक्टली एसोसिएटेड ना हो, उस तरह की कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, राइट? मैं 2 घंटे की क्लास दे रहा हूँ, सो फॉर एग्जांपल मेरी लेबर कॉस्ट इज $500 पर आवर। अगर आज मैं 2 घंटे की क्लास कंडक्ट करता हूँ तो मेरी लेबर कॉस्ट कितनी है? मेरी लेबर कॉस्ट इज $1000। ये कॉस्ट डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल है, ट्रेसेबल है। लेकिन इस क्लास को कंडक्ट करने के अगेंस्ट मैं इक्विपमेंट यूज कर रहा हूँ जो डिप्रीशिएट हो रहा है, मैं इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रहा हूँ, मैं किसी से फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट लेबर की सर्विसेज अवेल कर रहा हूँ, मैं यहाँ इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज कर रहा हूँ, मेरे पास इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जो डिप्रीशिएट हो रहे हैं, मैं इस जगह का रेंटल कॉस्ट पे कर रहा हूँ। तो कोई भी ऐसी कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड या एसोसिएटेड नहीं होती, लेकिन हमारी किसी भी जॉब को, एक्टिविटी को, आउटपुट को, प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने में दैट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, those type of costs are referred as indirect cost. So what is indirect cost? The cost which is not directly associated or related to production, the cost which is not identifiable or traceable to a particular unit cost, उस cost को indirect cost कहते हैं। और जो cost production से directly related, associated होती है, उस cost को direct cost कहा जाता है। Direct cost की example के अंदर we have direct material, the material which is directly involved in the production. Direct labor, the labor force whose physical or mental abilities are required directly to produce the output. And we have direct expenses which include licensing cost, or we can say the cost which is relating to using a brand name, which के अंदर हम royalties को include करते हैं या license cost को include करते हैं। अगर हम अपनी सारी डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल कर दें, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, द सम ऑफ ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट इज रेफर्ड एज प्राइम कॉस्ट। व्हाई डू वी कॉल इट एज अ प्राइम कॉस्ट? बिकॉज प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के अंदर एक प्राइम, मेजर, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, उस तरह की कॉस्ट को हम
प्राइम कॉस्ट कहते हैं। whereas जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली एसोसिएटेड रिलेटेड नहीं है, जिसमें रेंट, रेट, इंश्योरेंस, हीट, लाइट, पावर, डिप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर इन्वॉल्वड है, they all are part of indirect cost and they are referred as factory overheads or overheads as well. So hopefully you got the concept relating to direct cost and indirect cost. If you have any queries relating to direct and indirect cost, just raise the hands and then we'll move towards the definition. We can directly move towards the definition. If you have any confusion, any problem, we can directly move towards, right? If you have any confusion, any problem, use the chat bar. आप अपने chat bar को use कर सकते हैं, right? Sir, is there a lot of distortion direct cost की? Voice distortion हो रही है? Please repeat once. That indirect cost. Yes, indirect cost पे हम जा रहे हैं. Sir, आपकी आवाज थोड़ी हल्की आ रही है. All right, you just need to wait for a few moments. I am trying to rectify this thing. Right? Let's move on towards the definition. You can actually look at the definition and then we'll move on it. Alright guys, I guess अब आप सुन सकते होंगे easily, right? थोड़ा सा हैंड फ्री के साथ प्रॉब्लम था, स्पीकर के साथ प्रॉब्लम था, but we have now improved to a better quality one. Let's see कि आप लोगों को कोई distraction या फिर distortion नहीं होगा इसमें. So as we discuss about the direct cost की हमने बात की थी. What is direct cost? The cost which is directly associated or related to production. कोई भी ऐसी कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड हो, एसोसिएटेड हो, जिसको हम यूनिट कॉस्ट में आइडेंटिफाई कर सकें, ट्रेस कर सकें, that type of cost is called direct cost. And the examples of direct costs include direct material, direct labor, and direct expenses. Direct expenses के अंदर we have royalties, and the sum of all of this direct cost is referred as what? Prime cost. Right guys? तो प्राइम कॉस्ट क्या है? इज द सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. नाउ
आगे चल के हम जब वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझेंगे तो मैं आपको डायरेक्ट कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट के साथ भी लिंक करवाऊंगा, लेकिन नाउ वी कैन मूव टुवर्ड्स इनडायरेक्ट कॉस्ट। नाउ व्हाट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट? इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब है कि द कॉस्ट व्हिच इज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड और रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जिसको हम ट्रेस नहीं कर सकते, जिसे हम पर्टिकुलर यूनिट कॉस्ट में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट जरूर होती है। Such type of cost are referred as indirect cost. And the examples of indirect cost include indirect material, indirect labor. It include rent, rate, insurance, heat, light, power, depreciation, repair and maintenance. And the sum of all the indirect cost is referred as factory overheads. इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी अगर हम चाहें तो आगे चल के फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं। कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट फैक्ट्री रिलेटेड इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, कुछ कॉस्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड होती है। सम इनडायरेक्ट कॉस्ट कैन आल्सो बी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कॉस्ट। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी तीन कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट कैन आल्सो बी factory related indirect cost, that is production related indirect cost. Indirect cost can be non-production cost of admin and selling, administration and selling related cost भी हो सकती है। Admin and selling, and indirect cost can also be administrative related indirect cost. Third is admin, the third category of distribution, selling and distribution, and admin. Right, but right now we just need to focus on the production related indirect cost. आगे चल के हम non production indirect cost के बारे में भी discuss करेंगे कि administration, selling and distribution cost is also a part of indirect cost. Right guys, now categorization of cost on the basis of element के बाद we will now move, हमने element को discuss किया, हमने nature को discuss किया, and now we will be moving towards the most important concept, that is categorization and classification of cost on the basis of behavior. जैसे हम लोग cost को behavior पे categorize करेंगे, जब कभी भी cost on the basis of behavior categorize होती है तो cost can be categorized as variable or fixed cost. दो तरह का बिहेवियर कॉस्ट शो कर सकती है। कॉस्ट कैन ईदर बी वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड। नाउ फिक्स्ड और वेरिएबल में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल? So what is the main difference between fixed and variable cost? फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसी कॉस्ट जो हर एक्टिविटी, हर आउटपुट लेवल पर कांस्टेंट रहे, अनचेंज रहे, अनअफेक्टेड रहे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हम जीरो एक्टिविटी पर काम कर रहे हैं या हम फुल कैपेसिटी पे अपना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। द कॉस्ट व्हिच इज नॉट गोइंग टू बी changed due to changes or variation in output level will be referred as fixed cost. Fixed cost हर एक्टिविटी पर हमें पे करनी पड़ती है, एंड आउटपुट लेवल के चेंज होने से, मॉडिफाई होने से जो कॉस्ट चेंज नहीं होती उस कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रेंट की बात करें, एक बिजनेस प्रीमिसेस जिसका रेंट है से फॉर एग्जांपल 100,000, अब वो आउटपुट 1 यूनिट प्रोड्यूस करे, 0 प्रोड्यूस करे, 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करे, 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करे, जो भी कॉस्ट हमारे हर एक्टिविटी, हर आउटपुट लेवल पर कांस्टेंट रहे, अनचेंज, अनअफेक्टेड रहे, उस तरह की कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। द कॉस्ट which remain constant, unchanged, unaffected at all activity in the short run. I repeat, fixed cost long run में जाकर change हो सकती है, but short run के अंदर एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन जहां पर फर्म अपने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वेरी नहीं कर सकती, एटलीस्ट एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास कांस्टेंट रहता है, उस टाइम ड्यूरेशन में हमारी फिक्स्ड कॉस्ट भी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। The fixed costs which remain constant, unchanged, unaffected at all activity level, at all output level is referred as fixed cost.
Now फिक्स कॉस्ट हमेशा इन टोटल कांस्टेंट रहती है, राइट? मैं 1 यूनिट प्रोड्यूस करूं, मैं 2 यूनिट प्रोड्यूस करूं, फिक्स कॉस्ट इन टोटल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. बट एज वी इंक्रीज द आउटपुट लेवल, जैसे जैसे हम अपना आउटपुट लेवल इंक्रीज करेंगे, हमारी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट है, दैट इज गोइंग टू डिक्रीज. That means increase in output level, increase in activity level always decreases our per unit fixed cost. That means fixed costs in total remain constant, but per unit fixed cost decreases due to decrease in output level. जिसकी best example insurance है, rent है, and other fixed cost है. So let's move towards the definition and behavior of fixed cost. के behavior को हम कैसे determine कर सकते हैं? तुम यहाँ पे कर दो ना इसको. Now, when we talk about the definition of fixed cost, what is fixed cost? Fixed cost means the cost which remain fixed or constant. The cost which remain fixed, constant, or unchanged. The cost which remain fixed, constant, or unchanged at all level of output in the short run is defined as fixed cost. इसके अंदर रेंट एंड रेट्स इंक्लूडेड है, इंश्योरेंस इंक्लूडेड है, सर्टेन टाइम फैक्ट्री सुपरवाइजर या फिक्स्ड सैलरीज भी इसमें इंक्लूडेड होती हैं. सुपरवाइजर की कॉस्ट जरूरी नहीं है कि फिक्स्ड हो, राइट? इट कैन बी अ स्टेप फिक्स कॉस्ट, बट हम स्टेप फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आगे चल के स्टडी करेंगे. बट सुपरवाइजर सैलरीज को हम जरूरी नहीं है कि फिक्स कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करें. नाउ fixed cost needs to be paid irrespective कि we are producing zero output or working at our full capacity. Fixed cost हमेशा in total क्या रहती है? Constant. But per unit fixed cost decrease हो रही होती है with increase in level of output. और अगर इसी fixed cost के behavior को हम एक Cartesian plane के ऊपर express करें, right guys, एक Cartesian plane के ऊपर express करें, तो यहाँ पर हमारे पास दो कर्व्स हैं फिक्स कॉस्ट के. वन इज टोटल फिक्स कॉस्ट. टोटल फिक्स कॉस्ट में अगर आप देखो तो हर एक्टिविटी, हर आउटपुट लेवल पर हमारी फिक्स कॉस्ट क्या है? कांस्टेंट है, अनचेंज है, अनअफेक्टेड है. मैं जीरो आउटपुट प्रोड्यूस करूं तब भी, से फॉर एग्जांपल मेरी फिक्स कॉस्ट इज 10,000, राइट? मैं 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं तब भी हमारी फिक्स कॉस्ट 10,000 है. मैं 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करूं तब भी मेरी फिक्स कॉस्ट 10,000. एंड इफ आई एम वर्किंग एट माय फुल कैपेसिटी, द फिक्स कॉस्ट इन टोटल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. जब भी हम कॉस्ट बिहेवियर को एक्सप्रेस करते हैं, y एक्सिस के ऊपर वी ऑलवेज प्लॉट द कॉस्ट एंड x एक्सिस के ऊपर वी प्लॉट द आउटपुट लेवल. Now the other graph is relating to cost per unit. It is fixed cost per unit. कि जब हमने आउटपुट लेवल इंक्रीज किया तो हमारी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट है, वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, राइट? स्मॉलर आउटपुट लेवल पर जब मैं 1 यूनिट बना रहा हूं तो मेरी फिक्स कॉस्ट से फॉर एग्जांपल हायर साइड पर है. जैसे जैसे मैं आउटपुट लेवल इंक्रीज करूंगा, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी? डिक्रीज होती चली जाएगी, राइट? As we are going to increase the output level, the per unit fixed cost is going to decrease. But fixed cost per unit will never reach to zero because हर output level पर, हर capacity पर हमें कुछ ना कुछ element of fixed cost जरूर pay करना पड़ता है, right? It will never reach to zero. And this is the curve which expresses the behavior of per unit fixed cost. Right, guys? So fixed cost in total constant है, but per unit decreases due to increase in output level, and it needs to be paid irrespective we are producing zero output. हम zero capacity पे काम करें या full capacity पर, the same amount of fixed cost needs to be paid in the short run. Are we clear, guys? Now the second basis, this means हम अपनी cost को जब behavior पर categorize करते हैं, तो apart from the fixed behavior, cost can also show the variable behavior. Now what is variable cost? Variable cost का मतलब क्या है?
कोई भी ऐसी कॉस्ट जो आउटपुट लेवल के चेंज होने से अपना बिहेवियर चेंज करे, द कॉस्ट विच वेरीज ड्यू टू वेरिएंसेस और चेंजेस इन आउटपुट लेवल, वो कॉस्ट जो आउटपुट लेवल के चेंज होने से चेंज होती है, द कॉस्ट विच वेरीज ड्यू टू चेंजेस इन एक्टिविटी लेवल is referred as variable cost. Now, variable cost in total increases. जैसे जैसे हम अपना आउटपुट लेवल इंक्रीज करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल क्या होती है, इंक्रीज होती है. सपोज एग्जांपल के तौर पे मुझे आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए मटेरियल चाहिए. Now, what is my material? Material is say for example $5. As I'm increasing the output level, मेरी मटेरियल कॉस्ट भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. बट जैसे जैसे हम अपना आउटपुट लेवल इंक्रीज करेंगे, हमारी मटेरियल कॉस्ट इन टोटल इंक्रीज होगी, बट पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. ऑल्दो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहे, बट इट्स अवर जर्नल अजम्पशन कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, अनचेंज अनअफेक्टेड रहती है. राइट? Variable cost always increases in increase in output level. Total के अंदर variable cost increase करेगी, but per unit variable cost will remain constant. Direct material behavior के हिसाब से it's a variable cost, but nature के हिसाब से what was this? This was a direct cost. Direct labor behavior के हिसाब से it is a variable cost, but nature के हिसाब से it was a variable cost. Nature के हिसाब से it's a direct cost. Variable production overheads, these are overheads. Nature के हिसाब से these are indirect cost, but behavior point of view से अगर हम बात करें तो it is what? It is a variable cost. Variable sales overheads, sales का मतलब these are not production related cost, these are selling related cost. By function it is a selling related cost, but again by behavior what is this? This is variable cost. तो variable cost is also called marginal cost. Variable cost को हम एक और नाम से भी कॉल करते हैं. Variable cost is also called marginal cost because variable cost is the cost of producing one additional unit of output. एक सिंगल यूनिट को प्रोड्यूस करने के ऊपर, एडिशनल प्रोड्यूस करने पर जो कॉस्ट इंकर्ड होती है, दैट मींस as we increase the output level, we don't have to pay anything for the fixed cost, but we have to pay for the variable cost. The variable cost is also called the marginal cost. That means it is the cost of producing one additional unit of output. So what is variable cost? Variable cost is also called marginal cost. That means it is the cost of producing one additional unit of output. All right, guys. So now if we look at the behavior of the variable cost, वेरिएबल कॉस्ट का अगर हम बिहेवियर देखें तो जीरो एक्टिविटी के ऊपर हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जीरो. बट एज वी आर इंक्रीजिंग द आउटपुट लेवल, आवर टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो इंक्रीजिंग, एंड वेरिएबल कॉस्ट का कर्व इज ऑलवेज एट 45 डिग्रीज बिकॉज इसका जो चेंज है वो क्या है, कांस्टेंट है. हमें वेरिएबल कॉस्ट का जो इंक्रीज आता है वो हर दफा प्रोपोर्शनेट बेसिस पर इंक्रीज आता है. हम जैसे जैसे अपना आउटपुट लेवल इंक्रीज करेंगे, हमारी वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शनेट बेसिस पे क्या होगी, इंक्रीज होगी, एंड दिस इज रेफर्ड एज टोटल वेरिएबल कॉस्ट. बट इफ यू टॉक अबाउट द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास हर एक्टिविटी लेवल पर क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है. एंड इट ऑब्वियसली इट्स अ अजम्पशन, प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल. ये मार्जिनल कॉस्टिंग की, ब्रेक इवन की अजम्पशन है कि हमारी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट. Assumption of marginal cost, that per unit variable cost remains constant. That per unit variable cost remains constant. All right, everyone done with the concept? कोई confusion, कोई problem इसके अंदर? Let's move on towards the question answer session. If we are done with the concept of direct cost, indirect cost, fixed cost, variable cost, so let's move on towards the question answer session.
All right, kids. Let's move on towards the session. Let's see how what questions you are coming up. Yes, sir. It's perfectly fine and clear. All right. The second graph समझा दें दोबारा से fixed cost का. All right. Sir, can you please show the fixed cost graph again? Sir, हमेशा direct cost variable होती है. Not necessarily, right? In majority of the cases, the direct cost is meant to be variable cost. But under special circumstances, if we have a direct, say for example, special agreement with the supplier, if we have a special agreement with the labor force, फिर उस केस में हमारी direct cost fix भी हो सकती है. For example, in most of the colleges I'm teaching, I'm a direct labor over there. लेकिन मेरी जो सैलरीज हैं वो फिक्स्ड हैं. दैट मीन्स मेरा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है कि हर महीने मुझे इतना काम करना है, उसके अगेंस्ट मुझे इतनी सैलरी मिलेगी. दैट मीन्स इररिस्पेक्टिव कि मैं ज्यादा काम करूं या कम काम करूं, मेरी कॉस्ट के अंदर, मेरी सैलरी के अंदर कोई चेंज टेक प्लेस नहीं होता. दैट मीन्स कहने को तो मैं डायरेक्ट लेबर हूं, बट जो बिहेवियर है मेरी कॉस्ट का, द बिहेवियर ऑफ माई सैलरी, द बिहेवियर ऑफ माई वेज इज फिक्स्ड. राइट. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दोबारा समझा दें. Okay, let's move on towards the graph. Okay, I guess we have one more query. All right. सर हमें पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट की अजम्पशन से मार्जिनल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट में होगी. नॉर्मली यूजुअली जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो लीना याद रखिएगा, द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. ऑब्वियसली प्रैक्टिकल लाइफ में व्हेंस यू आर प्रोड्यूसिंग द आउटपुट लेवल, अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए यू आर ऑब्टेनिंग मटेरियल फॉर $3, राइट? इसका मतलब जो आप 2 यूनिट लोगे तो आपको 3 into 2 6, 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तो 3 into 10 30, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे 3 into 100 300, 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे 3 into 1000 3000 एंड सो ऑन. लेकिन जब मैं लार्जर आउटपुट लेवल प्रोड्यूस करूंगा, अपने सप्लायर से मटेरियल परचेज करूंगा, तो आई माइट बी इन अ पोजीशन टू ऑब्टेन द मटेरियल एट अ चीपर रेट. मुझे बल्क बैंक का डिस्काउंट मिलेगा. बट हमारी नॉर्मली अजम्पशन क्या होती है कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल रिमेन कांस्टेंट, बट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट.
Let's move on towards example number 1, guys. Example number 1. Example number 1. All right. Simple सी एक एग्जांपल स्टार्ट करते हैं जिसमें वी कैन कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट, वी कैन कैलकुलेट द सिंपल प्रॉफिट. तो एग्जांपल नंबर 1. Suppose the following information is available. The following information is available at output level of 10,000 units. The following information is available at output level of the following information is available at output level of 10,000 units. The following information is available at output level of 10,000 units. At output level of 10,000 units. For example, 10,000 units के ऊपर we are given with the following data, which include number 1, direct material. Direct material. All good? वीडियो नहीं चल रही थी क्या? All right, sir. We're starting with an example where we are given with the information. The following information is available at output level of 10,000 units. All right, guys, we are given with the following information at output level of we are given with the following information at output level of 10,000 units, which include direct material of $55,000. $55,000. We have direct labor cost. Direct labor cost of 42,000. We have variable production overheads. Variable production overheads. Overheads means overheads. PORD short में लिखा हुआ है. These are variable production overheads. That is 24,000. Then we have variable sales overheads. And variable sales overheads are suppose 20,000. Then we have fixed production overheads. Of 100,000.
and then we have fixed sales overheads. Of 60,000. Suppose we are given with this particular data where we know the output level is 10,000 units, and at 10,000 units, direct material cost is 55,000, direct labor cost is 42,000, variable production overheads are 24,000, variable sales overheads are 20,000, fixed production overheads are 100,000, and fixed sales overheads are 60,000. Suppose now we are required to calculate the marginal cost per unit. If I say requirement number 1 is to calculate marginal cost per unit, so what is marginal cost? Marginal cost का क्या मतलब होता है? Marginal cost means variable cost per unit. It means variable cost per unit. So अगर हमें variable cost per unit calculate करनी है, तो how can we calculate the variable cost per unit? How we can actually calculate variable cost per unit? Marginal cost बोला जाए या variable cost बोला जाए, सबसे पहले जो हमें डेटा दिया हुआ है, we'll see कि कौन कौन सी cost variable cost है. Is the direct material cost a variable cost? क्या direct material variable है? Yes sir. By behavior it is a variable cost, and by nature it is a direct cost. क्या direct labor is also a variable cost? Yes sir, direct labor is also a variable cost. Variable production overheads are also variable cost. Variable sales overhead is also a variable cost. Fixed production overhead साफ साफ लिखा हुआ है, it's a fixed cost. Fixed sales overhead is also a fixed cost. That means अगर मुझे per unit variable cost calculate करनी है, तो पहले मैं total निकालूंगा इन सारी cost का. What is my total variable cost? My total variable cost is 55,000 plus 42,000 plus 24,000 plus 20,000. My total variable cost is 141,000. And this is the cost given at output level of how many units? कितने units पर ये output level पर दिया हुआ है? Sir, this is the total variable cost of producing how many units? 10,000 units. So per unit variable cost is how much? Divided by 10,000 units. That means my per unit variable cost is $14.1. This is my per unit variable cost. What is 14.1? It's my per unit variable cost. What was our total variable cost? Total variable cost was 141,000, and this was the cost of producing 10,000 units. तो अगर 10,000 units पे हमारी total variable cost 141,000 है, तो what is my per unit variable cost? It's 14.1. Now the requirement number B is calculate total cost at output level of A 5,000 units, B 8,000 units, C 20,000 units, and D 50,000 units. That means अगर मुझे अब हर different activity level के ऊपर total cost calculate करनी है, तो what is the equation of total cost? Total cost is variable cost per unit into output level plus total fixed.
cost. Total cost equals to variable cost per unit into output level plus total fixed cost. TFC means total fixed cost. Now I need to calculate my total cost. Sir, I need to calculate my total cost. Kitne output level per? Sir, I need to prepare or I need to calculate total cost at output level of 5,000 units. I need to calculate my total cost at 8,000 units, 20,000 units, and at 50,000 units. So let's calculate. The first is 20,000 units. The next is, no sir, the first one is 5,000 units. Units को next line में हम लिख सकते हैं, right? This is 5,000 units. The next is 8,000 units. The next is 20,000 units. And the next one is 50,000 units. Right? Dollars. Everything would be marked in dollars. The cost would be expressed in dollars. Now, if you want to show the breakup of your variable cost, you can. But अगर आप चाहें तो directly भी calculate कर सकते हैं. सबसे पहले total variable cost. Total variable cost. And what is my total variable cost? Sir, what was per unit variable cost? Per unit variable cost हमने calculate की हुई थी, that was 14.1. Now 14.1 is my total variable cost multiplied with the output level of 5,000 units. So what is my total variable cost? Total variable cost will come to 70,500. Now, per unit variable cost is 14.1 multiplied with the output level of 8,000 units. So at 8,000 units, my total variable cost is 112,800. At 20,000 units, my total variable cost is going to be 14.1 into 20,000 units. So what is my total variable cost? It's 282,000. And if I'm producing 50,000 units, 50,000 units into 14.1, my total variable cost is 705,000. Now you see, as the output level is increasing, the total variable cost in total is increasing. But जो per unit variable cost है, वो हर activity level पर क्या है? Constant है, unchanged है, unaffected है. Now this is our total variable cost plus total fixed cost. And what is our total fixed cost? Total fixed cost हमारी क्या है? Sir, दो cost हमारी fixed cost में है. One is fixed production cost, which is 100,000, and one is fixed selling cost, 60,000. That makes 160,000. Now zero output produce करें, 10 units produce करें, 100 करें, 5,000, 10,000, हर output level पर fixed cost क्या रहेगी? Constant रहेगी. It is not going to be changed. इसका मतलब my total fixed cost is 160,000 at all output level. 5,000 units per B is 160,000, 8,000 units per B is 160,000, 20,000 per B 160,000, and 50,000 units per B is 160,000. इसका मतलब अब अगर मैं अपनी total cost calculate करूं तो variable cost total is 70,500 plus fixed cost is 160,000. That makes 230,500. Total cost is 230,500. The next is 160 plus 112,800. That makes 272,800. The next is 282 plus 160. That makes 442,000.
And the last is 705,000 plus 160,000. That makes 865,000. So what is our total cost? Total cost is fixed cost plus variable cost. Right, guys? Now, the next requirement. Suppose if the selling price is $20 per unit, if the selling price is $20 per unit, calculate profit or loss. Calculate profit or loss at output level of A, 8,000 units, suppose it's 6,000 units, at output level of 6,000 units, 15,000 units, next 40,000 units, and last but not the least, 100,000 units. Now, how do we calculate profit and loss? Profit and loss हम कैसे calculate कर सकते हैं? Profit and loss, simple way to calculate the profit is total revenue minus total cost. आगे चल के हम बहुत सारे दूसरे methods भी study करेंगे total cost calculate करने के. But right now, the profit can be calculated as total revenue minus total cost. It's total revenue minus total cost. How can we calculate our profit? Profit can be calculated as total revenue minus total cost. And what is our total revenue? How do we calculate total revenue? Total revenue is quantity sold multiplied by price. Quantity sold multiplied by price. So let's calculate the profit. We need to calculate profits at the following output level. Sales revenue. Less total variable cost, less total fixed cost equals to what? Profit. Minus total variable cost minus total fixed cost, and we can calculate the amount of what? Profit. So sir, 6,000 units की अगर हम बात करें तो 6,000 units. What is our selling price? The selling price is $20 per unit.
So 6,000 units, 6,000 multiplied by 20, the sales revenue is going to be 120,000. At 15,000 units, 15,000 into 20, the sales revenue is going to be 300,000. At 40,000, that is 800,000, and at 100,000, it's 2 million. 2,000,000. Variable cost per unit कितनी है? वही सर 14.1 is our variable cost per unit. तो 6,000 units की variable cost क्या होगी? 6,000 into 14.1, that is 84,600. Right? Next, 15,000 units pe what is our variable cost? The variable cost at 15,000 units would be 15,000 into 14.1, that is 2,11500. At 40,000 units, what is going to be our variable cost? That is 40,000 into 14.1, that is 564,000. And at 100,000 units, it's 14.1, that is 1,410,000. Minus fixed cost. Fixed cost, हर activity, हर output level पर क्या है? Constant is sir, and what is our total fixed cost? It's 160,000. 160,000 is our total fixed cost. $160,000. At all activity level, it's going to remain constant at 160,000. 160,000. 160,000. So now 120,000 minus 84,600 minus 160,000. Total cost is higher than the sales revenue. So there is a loss. 6,000 units pe we have a loss. We have a loss of 124,600. We have a loss of 124,600, which is in the bracket. At 15,000 units, the revenue is 300 minus 2,11500 minus 160,000. So 15,000 units per B, we have a loss of 71,500. Then 800,000 minus 546,000 minus 160, 564,000 minus 160,000. So we have a profit of 76,000. And then 2 million minus 1,410,000 minus the fixed cost 160. So the profit is 430,000. The profit is 430,000. So this is how we can calculate total cost and we can calculate the profit and loss. We'll move towards the next example and that would be given to you as a homework. ठीक है, हम आपको ये homework में देंगे example. Kindly इसको घर पे try कीजिएगा until the next class. Probably we will be scheduling the next class tomorrow, right? The timings will be informed to you. सारा information आपको आज Facebook से मिल जाएगा. Kindly follow our Facebook. Facebook पे आपको कल तक के सारे courses की details मिल जाएंगी कि कल कौन-कौन से courses होंगे. कल हम सिंगल एंट्री के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एएस के अंदर. एएस के अंदर ऑब्वियसली जिन लोगों ने ओवरहेड कॉस्टिंग किया हुआ है उनकी भी क्लास होगी. एंड इन टुमारोज क्लास वी विल आल्सो बी हैविंग सम ऑफ द कांसेप्ट रिलेटिंग टू मार्जिनल कॉस्टिंग. तो लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल नंबर 2. काइंडली इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और अगर नोट डाउन नहीं भी करेंगे तो मैं ये सारा जो काम हमने भी डिस्कस किया है इसको आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, राइट? एंड यू कैन आल्सो रिव्यू दिस वर्क फ्रॉम आवर फेसबुक, फ्रॉम आवर यूट्यूब चैनल के ऊपर भी ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी वीडियो की फॉर्म में. एग्जांपल नंबर 2. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. Direct material, 3 kg per unit.
What is direct material? Each unit requires 3 kg at the rate $4 per kg. Direct labor. Direct labor, each unit requires 45 minutes of direct labor time. 45 minutes per unit, and labor is paid at $8 per hour. Then we have variable production overheads. Variable production overheads, which are $5 per unit. And then we have variable sales overheads, which is $2 per unit. Fixed production overheads are 80,000. Fixed production overheads are 80,000. Fixed admin overheads 60,000. Fixed sales overheads 40,000. Selling price is $30 per unit. Required. A, marginal cost per unit. Number 2, total cost at output level of 10,000 units. Number 2, 18,000 units. Number 3, 30,000 units. Number 4, 50,000 units. Next, requirement number C. Calculate profit or loss. Calculate profit or loss at output level of calculate profit or loss at A, a 15,000 units, 30,000 units, 36,000 units,
70,000 units. The next requirement is what happened to profit and loss at output level of, explain what happened to profit and loss at output level of 36,000 units. Or we can move the question to the next page as well, I guess. We can use sideways as well. See, explain what happened to profit and loss at output level of 36,000 units. Explain what happened to profit and loss at output level of 36,000 units. Clear, guys? Now you need to solve this particular example. Everything relating to these documents will be posted on the WhatsApp group. It will be, the video will be available on the YouTube channel as well. So let's start on, first of all, towards the question answer session. We have 10 minutes for question answers. And then we'll be winding up our session. All right, everyone. Please kindly, if you have any questions, please use the chat bar, or if you want to raise any question, if you want to have any question, just raise your hands. I will be giving you the access of the mic. मैं आपको mic का access दे दूंगा. Total cost is total variable cost plus total fixed cost, which is variable cost per unit into output level will give us total variable cost and plus total fixed cost. Yes, we assume that all the units produced will be sold. Guys, if you need any participation, if you need to have access to mic, just raise your hands. I'm giving access to Altamash. Yes, Altamash. सर ये वो जो टोटल कॉस्ट वाली स्लाइड थी सर, वो थोड़ी सी मिस हो गई थी मुझसे, आपकी आवाज कोई नहीं आ मसला रही थी नहीं है, सर। आपको सारी स्लाइड्स मिल जाएंगी दोबारा से, कोई इशू नहीं है. यू विल बी रिसीविंग ऑल द स्लाइड्स. ठीक है सर, आपको पीडीएफ पे सब कुछ मिल जाएगा. And plus the video is also available on the YouTube channel. Have you subscribed to our YouTube channel, Altamash? Yes sir. Have you subscribed to our YouTube channel, right? Yes sir, yes. Bell icon भी दबाया था. Bell icon भी दबाया हुआ. All right, ठीक है. Thank you so much. जी sir. Yes, anyone else? Anyone else who need access to the mic, please just raise your hand. Raise your hand if you need an access of the mic. Yes, Anzila. यस सर, मुझे क्वेश्चन पूछना था कि वेरिएबल कॉस्ट जो है कांस्टेंट क्यों आएंगी, मुझे दोबारा समझा देंगे एक दफा. अंजिला, आप लड़की हो लड़का हो यार? नहीं सर, लड़का हो सर, क्या हो गया? कौन? अच्छा, हमें क्लास में आते हो मेरी क्वेश्चन में? जी सर. अच्छा, सॉरी, मुझे नहीं पता था यार, सॉरी. ओके कोई अंजिला. मसला नहीं सर. ओके अंजिला, वेरिएबल कॉस्ट की एक अजम्पशन है
कि वेरिएबल कॉस्ट हर एक्टिविटी हर आउटपुट लेवल पर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर मैं एक सिंगल यूनिट को प्रोड्यूस कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल इफ आई एम प्रोड्यूसिंग अ सिंगल यूनिट, राइट, इफ आई एम प्रोड्यूसिंग अ सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट को प्रोड्यूस करने की जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है वो हर एक्टिविटी पर क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अगर मैं एक सिंगल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए सपोज एग्जांपल के तौर पर $2 का मटेरियल यूज कर रहा हूं, तो इसका मतलब अगर 2 यूनिट बनाऊंगा तो इट्स गोइंग टू बी 4, अगर 6 यूनिट बनाऊंगा इट्स गोइंग टू बी 12, 10 यूनिट बनाऊंगा इट्स गोइंग टू बी 20, इट्स 100 यूनिट्स बनेंगे इट्स गोइंग टू बी 200। तो हमारी अजम्पशन ये होती है कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट क्या है, कांस्टेंट, अदरवाइज जो कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग है वो अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, ओके ओके, ऑलराइट, एनीवन एल्स हु नीड्स access to mic, just raise your hand. If you have any query, if you need an access to mic, just raise your hand. So there is no output level in example number 2. Yes, output level नहीं दिया हुआ because हर चीज पर यूनिट पर दी हुई है, right? हर चीज पर यूनिट पर दी हुई है। YouTube चैनल के लिए आप Facebook को देख लो, Facebook मेरे Facebook पेज के ऊपर अदील पेपरवाला Facebook पे आपको यू कैन गेट एन एक्सेस ऑफ, आपको शेयर मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा YouTube का। सर कोई फिक्स कॉस्ट डायरेक्ट भी हो सकती है? यस, डायरेक्ट मटेरियल सर्टेन टाइम फिक्स्ड हो सकता है, डायरेक्ट लेबर सर्टेन टाइम फिक्स्ड हो सकता है, पॉसिबल है। यस, एनी अदर थिंग गाइस? If you need an access to the mic, just raise your hands. Mohammed Abdullah. Yes, Abdullah. Yes, Abdullah, please speak up. सर नमाज पढ़ के आ जाऊं? नमाज पढ़ के आ जाओ बेटा, टाइम हो गया है, अभी ताजुद की नमाज पढ़ लेना, ठीक है? ठीक है सर। Anyone else? Anyone else who need an access, just raise your hands, guys. All right. So please till tomorrow आप लोग ये please काम complete कर लीजिएगा. I will be sharing the schedule, but please look at, मैं individual WhatsApp group पे नहीं बता सकूंगा सब चीजें. तो all of these would be available on the Facebook. Facebook से आप उसको देख सकते हैं कि कल किस टाइम पे कौन सा सेशन होगा. All right, kids. Take care, everyone. See you guys. Love you. Take care. ख्याल रखिएगा अपना. अल्लाह हाफिज.